Hello, my dear friends. Welcome back to my channel of literary art. In today's session, we are going to discuss about the short story, which is titled as The Doctor's Word. It is actually written by R.K. Narayan, and R.K. Narayan actually is the literary genius who has received so many awards, several prestigious awards he has received. Friends, the short story The Doctor's Word is actually the story about the friendship, trust, and hope. And uh, this writer or novelist R.K. Narayan, he actually paints such type of characters through his novels or through his writings, which can be local, but they can be globalized. That means such types of characters he sketched throughout his works, which we can find in our surrounding. हमारे आसपास के जो लोग हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक स्पेसिफिक सिचुएशन को किस प्रकार से वो रिस्पॉन्स करते हैं या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, अ, वो ही कैरेक्टर्स उन्होंने यहाँ पे हमें दिखाए हैं उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं या फिर उनके जो नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं उनमें, और वही कैरेक्टर्स हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड मिल जाते हैं, वही रिस्पॉन्सेस, वही सिचुएशंस, सेम कंडीशंस एंड सेम रिस्पॉन्सेस वी कैन फाइंड इन द होल वर्ल्ड ऑल्सो. तो यही बात उन्होंने हमें यहाँ पे समझाई है और उनकी यही क्वालिटी उन्हें ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है. तो फ्रेंड्स, ग्लोबल रीडर्स भी उनसे इंस्पायर हो गए हैं. इतना ही नहीं कि वी कैन से दैट ही कैन बी एक्चुअली रिगार्डेड एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन लिटरेचर एंड ग्लोबल लिटरेरी सीन दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू हिज स्टोरीज or through his novels, and these can be in the specific cultures and that can resonate universally. So friends, moreover, if we are going to see uh, R.K. Narayan's ability to depict the human condition in all its complexities makes his work timeless. Uh, he has a simple language. The narration which he does throughout his novels or short stories or through his works, that is actually the simple narration with more clarified themes that we have to consider again. अगर देखा जाए तो उन्हें बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड्स मिले हैं, साहित्य अकेडमी हो या फिर पद्म भूषण हो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो, तो ये सब हमें यही बात समझाते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव literary genius in the world. So, friends, let us see where he was born. Actually, he was born on 1906 in Chennai, and his name Rashipuram Krishnaswamy Narayan Swamy, better known as R.K. Narayan. मैंने जैसा आपको बताया कि हमें पता है कि he was an Indian writer and novelist, and he has completed his schooling and university in Mysore Maharaja College. So friends, if we are going to see his works, uh, such as the novels especially, such as The English Teacher, Vendor of Sweets, Financial Expert, The Dark Room, The Painter of Science, then the Waiting for Mahatma, Mr. Sampath, then The Guide, all these novels, and apart from that, one more short story collection, that is of Swami and Friends. Uh, all these novels we come across of one imaginary town which is called as Malgudi. And Malgudi, though a figment of Narayan's imagination, it actually resonates with readers around the globe as a quite essential Indian town. अगर उनके नॉवेल्स के बारे में बात की जाए, अगर उनकी थीम्स के बारे में बात की जाए, तो हमें दिखाई देता है कि सर्टन थीम्स कैन बी
considered, such as the tradition versus modernity, spirituality, and self-discovery. All these novels which had been written by R.K. Narayan, these themes actually resonates with readers who navigate similar tensions in their own lives, making Narayan's works relatable across generations. फ्रेंड्स, राजू गाइड जो है द गाइड में, तो हिज जर्नी फ्रॉम सेल्फ सर्विंग गाइड टू अ revered spiritual leader encapsulates the universal search for purpose and redemption. And his narrative techniques are notable for its use of a third person perspectives that allows readers to see events from multiple angles. So, friends, there is humor in his plays, and the irony is depicted through the humor. His characters often find themselves in absurd or comical situations, highlighting the paradoxes of life. His humor serves as a coping mechanism, allowing characters to navigate their struggles while providing readers with moments of levity. His legacy actually extends far beyond the pages of his novels. He is often regarded as a bridge between Indian literature and global literary scene. Friends, R.K. Narayan's जो अपील है उनकी वर्क्स में, it actually portrays his ability to portray such type of characters who struggles. आर के नारायण के मालगुडी डेज एक कलेक्शन जो है शॉर्ट स्टोरी का, उसी में से डॉक्टर्स वर्ल्ड ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है. एंड मालगुडी, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, दैट मालगुडी इज एन इमेजिनरी टाउन इन साउथ इंडिया. ये जो शॉर्ट स्टोरी है, दिस इज बेस्ड ऑन द टू फ्रेंड्स, टू कैरेक्टर्स who are very close friends, Dr. Raman and his friend Gopal. Friends, here is the theme of, we can say, the friendship, hope, and trust. Actually, this story explores the themes of friendship, trust, and hope. Friends, what happens is that Dr. Raman is a doctor, and he believes that whatever is going to happen, we must have to tell to the patient very straightly, and without creating any type of doubt, or without creating any type of false expectations in the mind of patients. So whoever comes to him, he used to tell the truth, or whatever is going to happen, he was ready to tell them. That means he never gave the false promises or false expectations, never he created in the minds of his patients. So friends, he rather considers that everyone should be transparent and know the sensitivity of the situation. जो भी पेशेंट उनके सामने आता था, तो जो भी कुछ होने वाला है फ्यूचर में उस पेशेंट के साथ, चाहे अच्छा हो या बुरा, स्ट्रेटली वो कह देते थे, या फिर किसी फॉल्स एक्सपेक्टेशन में उनके पेशेंट को वो नहीं रखते थे, या फिर ऐसा नहीं कहते थे कि अगर वो मरने वाला है तो वो नहीं कहते थे कि तुम जिंदा रहने वाले हो, या फिर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, यू विल बी बेटर एंड एक्सेट्रा. But he always told the truth to the patient and never gave the false promises or false expectations. He never created in the mind of the patients. So here what happens is that Gopal is the patient, Gopal is the friend, a very close friend to Dr. Raman, and he every day he used to come to meet to Dr. Raman. Though there was a long line of patients in front of Dr. Raman, then also he waited for Raman or Ramu, Dr. Ramu, and unless and until he completes his job or service to his patients, he used to wait for Dr. Raman, and later on he used to meet to him and return to his home. That means जब भी लंबी कतार होने के बावजूद भी वो अपने फ्रेंड डॉक्टर रामू से मिलने के लिए रोज उस हॉस्पिटल में गोपाल आता था. और
ये लंबी कतार जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो डॉक्टर रामू के लिए वेट करता था, और जब ये लंबी कतार खत्म हो जाए तब वो डॉक्टर रामू से मिल के अपने घर वापस चला जाता था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि गोपाल का जो अफेक्शन है रामू से मिलने का, या फिर रामू का जो अफेक्शन है गोपाल से मिलने का, वो बहुत ही क्या कह सकते हैं हम, बहुत ही रिच है, या फिर उनकी जो फ्रेंडशिप है, जो उनका जो ट्रस्ट है एक दूसरे के लिए, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और गांव के जो लोग हैं, दे हैड द ब्लाइंड फेथ इन डॉक्टर रमन। व्हाई? बिकॉज ही नेवर गेव फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और फॉल्स प्रोमिसेस टू हिज पेशेंट्स। गांव के जो लोग हैं उनको डॉक्टर रामू के बारे में बहुत ही ज्यादा विश्वास था, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट में भी उनको बहुत ही ज्यादा विश्वास था, और उनको ऐसा लगता था कि ये जो डॉक्टर रामू है, अगर हम एक बार उनके पास चले जाए तो हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, और जो कुछ भी है वो हमें सही सही तरीके से बता देंगे, और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है हमें बस वहीं पे मिल सकता है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम ये था कि जब वो लास्ट स्टेज पे रहते थे तो देन दे यूज टू टर्न टूवर्ड्स डॉक्टर रामू। तो ये भी बात वहां पे यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। एक दिन क्या होता है कि गोपाल जो है, डॉक्टर रामू का जो फ्रेंड है डॉक्टर गोपाल, वो बीमार पड़ जाता है, और 2-3 महीने मिलने नहीं आता है रामू से। और एक बार क्या होता है, डॉक्टर रामू के यहाँ पे गोपाल का बेटा पहुंच जाता है, और वो कहता है कि come to my home, my father is ill and he needs your treatment. At that time what happens is that Dr. Ramu was quite under pressure. He was quite nervous, and when he sees his friend on the bed, at that time he was quite emotional. When he treats his friend Gopal, at that time he feels that Gopal cannot live for many days, but uh, the fact that he never told lies to the patients, या फिर हम कह सकते हैं कि कभी उसने कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन अपने पेशेंट के मन में नहीं डाली थी। एक जो बहुत ही जो सच्चाई है वो अपने पेशेंट को बता देते थे। तो ये सच्चाई वो यहाँ पे नहीं बता सकते थे, क्योंकि गोपाल उनका बहुत ही करीबी दोस्त था, और वो मरने जा रहा है ये बात वो गोपाल की पत्नी या फिर उसके बच्चे को नहीं कह सकते थे, और खुद को भी वो समझा रहे थे कि गोपाल इज नॉट गोइंग टू डाई, दो ही वॉज नोइंग दैट ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम द डिसीज और इलनेस, देन ऑल्सो ही वॉज नॉट रेडी टू से दैट गोपाल इज गोइंग टू डाई। तो गोपाल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर रामू से पूछता है कि मुझे क्या हुआ है और क्या मैं जिंदा रहने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर रामू क्या कहते हैं, यू विल बी फाइन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू। तुम बहुत बहुत अच्छे हो जाओगे मेरी ट्रीटमेंट के बाद, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत साल जिंदा रहोगे, ऐसा वो कहता है। लेकिन दूसरे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कह दिया था कि ये ज्यादा दिन अब नहीं रहेगा, इसलिए गोपाल ने एक विल बना ली थी, और वो विल वो रामू को दिखाता है। तो उस टाइम डॉक्टर रामू कहते हैं कि देर इज नो नीड टू मेक द विल of your property. Why? Because you will be fine, and you will live for for many years. तो ऐसा कहने के बाद एक जो होप है, एक जो ट्रस्ट है उनके मन में अपने फ्रेंड के ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर उसके जो शब्द थे वो उसके मन को बहुत लग गए थे। और सेकेंड डे आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर रामू, सेकेंड डे इफ वी आर गोइंग टू सी, गोपाल वॉज absolutely okay, and he thought he was thinking that now I am going to live for 100 years or many years, and there was hope in his mind that he will live, he is not going to die due to any type of disease or due to any type of illness. So
जब वो कहता है कि you are going to be absolutely fine and there is no requirement of a will, that is all Gopal was needed at that time. And this friend's word or the doctor's word was needed by Gopal. The next morning Gopal was all fine, and Ramu is 100% sure that his friend will live till the age of 90 years. That means many years he is going to live. And the here the significance of the title of short story we have to consider here, or we shall clarify the significance of the title. The Doctor's Word is a simple yet striking short story that narrates an incident in Ramu's life. The story of the story is about the day when doctor's friend falls ill, and the hope is what keeps us going. There was hope in the mind of a doctor, there was hope in the mind of a patient, and there was hope in the mind of patient's wife and his child. So we have to consider that that hope was created by whom? By the doctor. And that is the reason why that patient was ready to live. He was not going to die. And seeing his friend's sickness, uh, certain actions of the doctor were quite doubtful, but then also there was immense trust of the patient in the doctor, which has been portrayed in the short story. So that we have to consider here, that Ramu wanted to protect Gopal. Ramu wanted to cure Gopal. Ramu was the doctor. He wanted to cure his patient. He wanted to cure his friend Gopal, and he became successful in serving his friend very well. And now he has the hope that he will live for 90 years or for many years. Ramu was uncertain of his friend's recovery, yet he chose to lie, and as he knew how much his statement would affect his friend. Truly, the story showcases the notion of trust and is beautifully built on Ramu and Gopal's friendship. So, friends, this was about the short story, The Doctor's Word. If you like this video, please like, share, and subscribe my YouTube channel of Literary Art. And thank you for watching this video. Thank you very much. Thank you.